Hi guys, welcome to Astra Tarot. My name is Yachna. I am a psychic tarot reader and I'm also trauma informed life coach. Apologies, मेरे को बहुत दिन हो गए कि मैं कोई वीडियो बना पाई. I was not feeling well emotionally. I had to deal with my own patterns. But here I am back. Oops. And my cards are flying already. So give me a minute. Okay. Even before shuffling the card, I have these two cards which I'm called to take, and also I have like this small bowl that I purchased for clearing the energies. Okay, coming back. So, I hope you guys are doing better than yesterday. That's what my motto is. Ki life keeps on changing every day, but somehow we need to do something new and learn our lessons and move on each single day. तो आज की रीडिंग I have kept it open, whatever comes, whatever you guys need to know right now. I'm gonna channel that energy that wants to reach you, or channelize anyone's energy who is very close to you. कोई ऐसा इंसान जो आपके बहुत क्लोज है इमोशनली, आप उसके साथ एक अलग तरह का सोलफुल कनेक्शन फील करते हो. इट कुड बी एनी ऑफ योर एक्स पार्टनर्स, इट कुड बी लाइक अनरिक्वाइटेड लव, और इट कुड बी इवन आई वुड से हो सकता है कोई ऐसा फ्रेंड जो शायद आप लोगों को कभी मौका ही नहीं मिला मतलब ये एक्सप्लोर करने का कि वॉज इट लव और वॉज इट जस्ट लाइक an attraction, or just like you hit it off very nicely with that person. So कोई ऐसा जिसके साथ आपका एक deep soulful connection हो, so उसकी energy channelize कर रही हूँ मैं. And let's see that what is this person with whom you have special connection. और ये जो दो cards निकले हैं which flew off my deck, I'm gonna keep it aside and probably take it as guidance, I would say, towards the end of my reading. Okay. Your spirit angels and guides, what is the energy of this special person of my viewer? What are they feeling right now? What are their feelings right now? Okay, Ace of Pentacles, the Fool, Death, okay, Five of Pentacles, Ten of Cups, okay, and the Chariot, okay. Bottom of the deck, Queen of Cups. Okay, so ये जो भी स्पेशल पर्सन है या था, हो सकता है आप इसके साथ किसी रिलेशनशिप में थे पहले, या क्लोज फ्रेंडशिप में थे, सिचुएशनशिप भी हो सकती है. जस्ट लाइक टेक वट एवर रेजोनेट्स विद यू. सो मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि हो सकता है कि आपने इस इंसान के साथ लाइक वेरी रिसेंटली कट ऑफ किया हो. हो सकता है आपने जितना भी टाइम इनके साथ गुजारा, they were not very emotionally welcoming to you. They were
कीपिंग यू आउटसाइड ऑफ देयर इमोशनल बाउंड्री, मतलब वो इमोशनली अवेलेबल नहीं थे. दे वर कीपिंग देयर इमोशंस और देयर डीप फीलिंग्स टू दैम, दे वर नॉट एक्सप्रेसिंग. And maybe you were very disappointed because you wanted to have that real deep connection, emotional connection. एक bond बनाना चाहते थे इस इंसान के साथ, but that couldn't happen. And आप हो सकता है कि इनके साथ आप ये भी चाहते हो थे कि आप एक दिन इनके साथ लाइक कमिटमेंट में जाएं, मैरिज करें, फैमिली बिल्ड करें, और एक हैप्पी एवर आफ्टर you might have wanted from this person, but it didn't happen because शायद ये emotionally बहुत cold था person, like emotionally closed off. And I guess आप बहुत recently आपने मतलब एक इस pattern को, इस relationship को या इस connection को you've just like put an end to this because it was not serving you. और मुझे लगता है कि ये इंसान अभी एस ऑफ पेंटिकल्स, मतलब ये एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल, ये इंसान एरीज हो सकता है, फायर साइन हो सकता है, एरीज, सैजिटेरियस, लियो. सो आई फील दैट जब से आपने ये कनेक्शन को बाय किया है या आपने इमोशनली डिटैच करा है अपने आप को, दे वांट टू कम टू यू एंड हैव अ न्यू बिगनिंग. मतलब ये कहीं ना कहीं मन में ऐसा चाह रहे थे बिकॉज ये आपको एज अ क्वीन ऑफ कप्स देखता है. They see you as a queen of cups, somebody who is very emotionally nurturing. आप उनका बहुत ख्याल रखते थे. You were very soft hearted, very emotionally available and like ready to give the bestest of your life moments, memories to them in all ways. मतलब you were ready to pour so much into them. And but for whatever reason, like Five of Pentacles shows that this person is emotionally cut off, emotionally unavailable, so they were not able to like take any action at that time, right? But अब मुझे Chariot का कार्ड भी आ रहा है. मुझे ऐसा लग रहा है कि now when you have distanced yourself, when you are emotionally attaching, तो उनको ये feel हो रही है energy कि now you do not care, now you are not available to pour all your love and concern into this person. So now they're really, sitting and realizing that मतलब what they have lost. And वो जब आपके साथ थे तो how did they feel, हो सकता है वो उन्होंने किसी और थर्ड पार्टी के साथ भी कोई रिलेशनशिप रखा हो या उनका कोई थर्ड पार्टी हो. they might be dating somebody else along with you, but they are not feeling that kind of love and nurture and care जो आपसे मिलती थी. So now they are like they want to take action, they want to like come back and have a new beginning with you. And कहीं ना कहीं वो शायद ये भी चाहते हैं कि आप अगर वो आएँ और आपको एक ऑफ़र दें तो it is gonna be like they don't want you to think like totally jump into कि वो आपको commitment दे देंगे, but it's just that a nonchalant way they want to come back and start things all over again with you. So Chariot card ये भी हो सकता है कि ये सोच रहे हैं कि they want to take action. Okay. Nine of Cups. तो मुझे ये लगता है कि ये आपको लाइक Queen of Cups और Nine of Cups में देखते हैं. जो आप अभी ना इस टाइम पे आप सिर्फ अपने पे फोकस कर रहे हो. मतलब आफ्टर यू हैव लेफ्ट गॉन ऑफ दिस पर्सन, यू आर नाउ जस्ट फोकसिंग ऑन योर लव. लाइक आप जो इनको देते थे, दैट यू हैव कन्वर्टेड into self love for yourself. You're taking care of yourself, अपने खाने का, पीने का, like traveling. You might be traveling out with friends or having emotional experiences with friends and groups जो आप अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो, and you are just watching them from a distance, that because you are no more interested. आपने बहुत टाइम मतलब इनके साथ ऐसे रहे होंगे. क्वीन ऑफ कप्स, लाइक गिविंग, नर्चरिंग. मतलब मुझे ये लगता है कि बहुत इम्बैलेंस्ड रिलेशनशिप था ऑफ कोर्स. So मतलब नाइट ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो, इट मीन्स दैट कहीं ना कहीं ये इंसान मतलब अपने दिमाग में ये सोचता रहता है. इसके अंदर एक वो स्पार्क रहती है कि यार मतलब मैं आके आपकी तरफ वो आए और एक नया बिगनिंग और एक कुछ नया कन्फेशन या कुछ नया टाइप का रिलेशनशिप शायद
या एक प्लेटोनिक फ्रेंडशिप बनाने की कोशिश करे. They want to take that action towards you, but I don't know, I'm not feeling that they are prepared to take that action right now. They might be thinking of taking an action in future. So I don't know, ये जो भी इंसान है इसने आपका बहुत दिल दुखाया है, I guess, because death is a very heavy energy. And ये जो दो cards आए थे, I would say I feel this is your energy. It's like Two of Wands and Star card. So you might be already healing from the hurt that this person has given you, or from your childhood traumas. You are already on a healing journey. और आप मतलब आई गेस ये जो डेथ की एनर्जी है जो आप इसको कट ऑफ किया अपने इंसान को, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द हीलिंग दैट यू हैव डन ऑन योर सेल्फ. एंड यू हैव लाइक लॉन्ग टर्म प्लान्स. मतलब जैसे अपना कुछ नया काम या नई जॉब या कुछ नई चीज़ें क्रिएटिव के लिए आप सोच रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस अपने लिए प्लानिंग कर रहे हैं आफ्टर यू हैव हील्ड एंड यू हैव लेट गॉन दिस पर्सन, दिस साइकिल, दिस रिलेशनशिप जो भी था आपके बीच में. सो दैट इज़ द रीज़न दैट दे आर नाउ रियली wanting to come back and wanting to come back quickly. मतलब ऐसा भी कि कैसे वो आके ना आपके साथ एक नई बिगनिंग, आपको एक ऑफ़र दें जिससे आपके बीच में एक नई शुरुआत हो. That's what they are wanting. Okay. Knight of Wands also can show that they can be very passionate about you, and that is also one thing that they want to maybe come and explore. That अगर आपके बीच में commitment नहीं भी हो सकती तो are you still interested to have like a casual hookup or fling with them, or just get emotionally intimate with them. So they're very like in their fields. तो उनका मतलब मन अंदर से ये कर रहा है कि बस उठ के आपके पास आ जाए वो. But I think you've put an end to this. 4 of Wands. Okay, so ये भी मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है कि you are healing because you in long run this is what you want for yourself. You want a very committed relationship, एक healthy relationship experience करना चाहते हो. So you're healing yourself so that you can attract somebody who can give you this kind of like commitment, happy marriage, happy life, एक fulfilled family, एक घर, एक मतलब stability. This is what you are manifesting in your life. And star cards also says that आप अपनी लाइफ में वो बैलेंस ला रहे हो, बिकॉज हो सकता है कि आप बहुत नर्चरिंग और बहुत केयरिंग इंसान हो और आपने इतने साल तक दिया ही दिया लोगों को, बट नाउ यू रियली वांट टू बी इन दैट एनर्जी दैट समबडी कैन कम एंड गिव यू दिस ऑफर विच इज़ लाइक फुल एंड फाइनल विद whom you think you can settle down for the rest of your life. Okay, I just want to like take one more card as a guidance from the universe for you, especially when you are healing and moving forward and you are just like putting an end to what was, just learning your lessons कि जो भी हुआ वो आपको कुछ सिखाने आया था. हो सकता है आप इमोशनली कोडिपेंडेंट थे, बट नाउ यू नो हाउ टू टेक केयर ऑफ़ योर इमोशंस. नाउ यू नो दैट लव एंड अब्यूज़ में क्या फ़र्क है. नाउ यू नो दैट somebody who was very nonchalant or was not ready to give you commitment or was not emotionally available to connect, you do not want to be around that person anymore. So आपकी guidance है 5 of Wands, okay, and Page of Wands. So इससे मुझे 5 of Wands रिवर्स आया था, तो इससे मुझे ये लगता है कि आप वो जो कन्फ्लिक्ट वाली स्टेट में थे ना, मेंटल कन्फ्लिक्ट की स्टेटमेंट की क्या करूँ क्या नहीं करूँ, you are like just moving out of that energy and you are actually Page of Wands, like you are creating a new spark in your life, looking forward to something new, कोई नया इंसान, कोई नया एक्सपीरियंस, कोई नया फ्रेंडशिप. बिकॉज शायद आप ये पुरानी कन्फ्लिक्टिंग मेंटल स्टेट में जो ये इंसान आपको मतलब ऐसे रखता था हुकअप करके कि मतलब ना आपको कमिटमेंट देनी है ना आप साथ इमोशनली इन्वेस्ट करना है, but they wanted to keep you around for a long time, so which you've already broken. So you're coming out of this mental conflict and you're looking for creating something which really interests you, which is your passion. And
मतलब somebody who is very like visionary of what you want and what you don't want. So you have got that clarity in your mind right now कि आपको क्या चाहिए और आपको क्या नहीं चाहिए. So you are in a position to like put strong boundaries and keep moving ahead. So like I said, like 8 of मतलब death के पास बाद you might have experienced like this stuck energy for a very long time. You were really tied to this person. You were like, हो सकता है आप trauma bonded हो इस इंसान के साथ, but you've already like put an end to this. Death means you just like from your side the chapter is closed. I know it would have been very very difficult for you. Queen of Wands again, like you are now embodying an energy of the Queen of Wands. Queen of Wands is somebody who knows her value, who knows her worth, who knows कि practical decisions कैसे लेते हैं, who knows that how much a person deserves out of you, who can take decisions like not from heart but from mind also. And you've become very intuitive, and you know that you're not going to accept anyone. Like you know कि आपको आपके like real partner में क्या क्या qualities चाहिए. So you are very clear on that. Okay, so I would say that this is what you are manifesting. Continue, keep healing yourself, keep in mind जो भी lessons इस इंसान ने आपको सिखाए हैं, because वो बहुत ज़रूरी थे. All that happened because you had to learn certain lessons for yourself, and so that you can finally manifest and attract this kind of relationship which is healthy, which is grounding, which will bring a lot of stability and security in your life. घर, एक family, एक happy fulfilled marriage या commitment, long term relationship. So just like keep healing and just keep praying, keep connecting with the universe so that you can attract this beautiful partner for yourself, beautiful relationship for yourself. So यहीं पे मैं आज की रीडिंग एंड करती हूँ. अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो then please do like, share and comment, and just to keep me motivated to keep coming, do subscribe to my channel. So bye for now and take care.